I request all the participants and their students be seated. It is going to be a very knowledgeable lecture. Yes, sir. First of all, I would like to thank the training coordinators, Dr. FAHEEMA and Dr. Ejaz, all the team led by your Honorable Vice Chancellor and all the dear participants, students. It's really a proud privilege to present to you what the work that we are doing at Indian Agriculture Research Institute. And the topic I have taken in consultation with Dr. FAHEEMA that what are the new work that we are doing related to especially the IoT and sensor operated smart urban farming. So in the picture that you are seeing, this is the Center for Protected Cultivation Technology. It's a center located at Indian Agriculture Research Institute. So first of all, that I request all the students and participants who are there, if they visit Delhi in Indian Agriculture, they should must visit, because every year we are trying to bring many nowadays students, especially the faculties also, and many students from SYED, from engineering division, from horticulture division, they are regularly visiting. So I shall be presenting the few details what we are doing, especially related to protected cultivation technology, smart urban farming, and all these things. Next slide, please. Okay, so what I shall be talking to you especially about that what is the present status and future prospects of urban farming, which is mostly here that what we are urban farming, that is in the form of protected. What is the greenhouse cultivation technology, whether it is soil-based or soilless, and then lot of new types of technology, that is the soilless, hydroponics and aeroponics technology. How we are doing not only its infrastructure development, but then next level, that is what sort of automation is required, how we do the automation, what is its advantages, and then above one level of automation there is a new thing, that is a new technology, it is called IoT, that is Internet of Things. So what Internet thing of it is all about, what is the advantages and challenges, technological and policy issues. So these are the few things that I shall be trying to cover you, that will help you to develop, as you know that we are here in this technology, basically to develop the entrepreneurship development. So not only you have to learn the technology in detail, but you have to see that what is the entrepreneurship ability that is there hidden in this type of technology. And let me tell you, there are many startups now, they are doing very good work in this area of protected cultivation and urban farming, and doing very good entrepreneurship. As Dr. Ganesh has told that let us some new students after their graduation, they should take this type of work and they can do it. It is not that you take something very tough thing. You can start with some very basic things related to your conditions and then go for its farming, go for its automation and entrepreneurship based technology. Okay, so first of all, I with the help of many experts, try to learn this very important technology nowadays, that is the urban farming that is based on protected cultivation. Next slide, please. See, nowadays, if you see the farming nowadays, it is broadly of two types. One is on left side is a normal farming, horizontal farming, and then there is a vertical farming. Nowadays we have very less space. Space is less, space is costly, and then the farm area is less. So if you try to develop any particular area, say like greenhouse, if you develop a greenhouse, then it's the climate controlled greenhouse is a very costly structure. So how to utilize its all space efficiently? Then we have to go for vertical farming. So vertical farming says that in the horizontal farming you see that you are taking only one particular bed, that is the soil. But in vertical farming, see that you are taking in multiple beds. Okay, so you are utilizing. So once you take the plant in vertical farming, what will happen? That number of plants will increase. Okay, so you have more number of plants, you have high production, all these things. But when the number of plants and when you are going for vertical farming, there are many technological challenges are there. Okay, how you build the infrastructure. If you have multiple layers, then what will happen?
If the sunlight is coming, then the bottom layer they will not get the sunlight properly. So how will you manage the sunlight? What sort of varieties are there? Every plant you cannot grow in vertical farming. So you have to see that what are the plants, and especially say near to J&K, Jammu and Kashmir, what are the vegetables, what are the flowers, what are the seedlings that you want to grow. So there are many issues are there. So together if you work as a team and then develop a good project, you will get a good things. Okay? So just this is about the farming, and then coming to a new word, that is the as Vishi Sahib has told, that see that the farming has moved to sustainable commercial farming. So anything if you say that it is sustainable smart urban farming, what are its issues, why it is required? See now, if we say sustainable smart urban farming, why? Because in the coming days, in the future, the two very important things for agriculture, that is the water and energy. These are the inputs. In the coming days, there will be very strong competition for this thing, because there will be no water. You have very less water, and when you have this type of infrastructure like urban farming, they require round the year of water. So how to make this water available? And then, you know, I don't think if you have seen the modern urban farming based farm, like say climate controlled greenhouse, there are so many energy gadgets are there. You have cooling facility, heating facilities, okay, automation facilities, exhaust facilities. They require lots of energy, because they are all motors, pumps are there. So they require lots of energy. How you will make this energy available? So these things you have to see. But what we have found, that with the help of research, basic research that our students have done, that this smart farming, like hydroponics, aeroponics, and soilless cultivation, they are very water efficient. They require very less water. Their water efficiency is very, very high. So that is the beauty of this technology. The next is nowadays very important thing. Every day, everything should be precision. It's a precision farming. So as a horticulture student, that you should must know what every farming that you say, okay, it should be precision. So how we will define precision? For precision, anything we call it precision, three things are required. That all the inputs that you have to apply in agriculture, that has to be complied with 3R. What are these 3R? That is the right amount, right place, and right time. So how to make these things available? Any input, say water, fertilizer, chemicals, okay, micronutrients, any fertilizers you are giving. How to make this, how you will give the plants in right amount, right place, and right time. So there are many machines that will help you, many sensors that will help you to make this thing happen. So then you will call this, if you are using those things, then your farming is precision farming. Okay? Next is controlled environment agriculture. So you understand the importance of controlled environment agriculture is that, you see nowadays, suppose take the example of everywhere now there is a harsh climate. You have extreme summer, you have extreme winter, somewhere you have extreme rainfall. So you have everything extreme due to climate change. And these extreme things is putting lots of pressure into agriculture everywhere. So let me give you the example of in and around the northern India, in and around the Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan. In those conditions, in the peak summer, the temperature goes as high as around 45 degrees centigrade. Now, in those temperatures, how you will be able to grow the crop? That you have to see. Similarly, if you can see the area like J&K, you have extreme winter. In extreme winter, the temperature here goes almost in minus. Okay. So in that case, if any one farmer wants to grow anything, is it possible? Yes, it is possible. Nowadays, I will show you some models that we have. These are the smart farming models. That models that we have shown to the, recently there was a very big event, G20 event was held about 2 months back in our country. We have shown the G20 delegates that we can produce good things like vegetables, seedlings, herbs, flowers in any place. Suppose if you, this is your office, this is your
your home, you want to grow something here, you can do it. You have the models that will help you to grow the crops in your home, in your classroom. Nowadays it is there. Why it is required? Because nowadays we require this type of models. So that is called controlled environment agriculture. So because here the environment is controlled, light you have to manage. So that's why this controlled environment agriculture. Now in controlled environment agriculture, first of all what you want to know that suppose if you want to grow the crop here, then you have to build the infrastructure. How your plant will grow, okay? And then where will be the pumps, where will be the stands, how you will grow. So this is the infrastructure. Next level is that you try to go for its automation. You will use some sensors, you will use some devices that will help you to automation. And there are lots of vertical farming based models are there. And these models are, first of all, in these models that normally in this model we do not use soil. Why we do not use soil? Because of two particular reasons. Soil is not bad, soil is very good, but when we go for vertical farming, we do not use soil because soil is normally its weight is very high. So we used to have some very light material. What are those light materials? There are many light materials are available. The one very common light material that is available, what we call coconut husk. Coconut husk is very popularly available in our country. It is also known as commercially cocoa peat. Okay? So cocoa peat is one hand. So there are many things. You have cocoa peat, you have vermiculite, you have perlite, you have there are so many things. These are inert materials that are very light in weight and their bulk density. There is a one term that you have read in the soil science. The bulk density of say normal soil, it is as high as 1.3, 1.4, 1.6 gram per cubic meter. But the light materials have very less bulk density. They are light in weight. They are inert in nature. So anything, water and nutrient management thing that you can do it very easily. Okay? Yeah, sir. So that's why. So this is one thing. So you have soilless. Then you have. I have told you there are so many soilless materials are there. Then we have pure hydroponics. Pure hydroponics, it means that you will use only water. So there will be a channels and then different types of channel you can use that has the provision of flowing water. How you will make the water flow? With the help of small pump. If the small pump is there, it will make the water flow. Okay? That is called hydroponics. So if you have to go for it, first of all, how the hydroponics based infrastructure you have to design. I will show you this many things. So first of all is the infrastructure, and then when we go for its automation, Dr. Jaspal and we are working very closely. Dr. Jaspal and his team at SYED Mohali. You must visit that center. There are he belongs to one organization called Center for Development of Advanced Computing, SYED. There are many SYED in our country, but he belongs to the SYED Mohali. So we are doing lots of programs together, and he has developed very good model of hydroponics that is with IoT and automation. So he will be talking about this in the next class. So then so you have hydroponics, and then you have aeroponics. Aeroponics, you understand which is what? Aeroponics means you can grow the plants in the air. Okay? Now how will you grow the plant in the air? Suppose a very, very basic thing I will ask you, that suppose if you have to grow the plant here, it is the air. So the first very basic thing is that if we want to grow the plant here, then what will happen? The plant will just fall down. So first of all, there should be something to support the plant, hold the plant. So I will show you. You can build it yourself. These technologies are, I think, very good entrepreneurship, I believe. That I will show you. My MTech student has developed 50 plant-based models. It's aeroponic-based model. So these models are there. It's a small model is there, aeroponic model, and to how it will looks like to hold the plant. Now the plants are hanging in the air. Then next is that the plant will grow. So the plants require water, nutrient, and light. Okay. So you have to provide some light,
and then water and nutrient, because plants are hanging in the air, so its roots are exposed. So you have to give, there will be lots of nozzles are there that supply water and nutrient to the root. That is what it is. So how it looks like that I will show you in one of the slides. Next please. Okay. So you know that smart urban farming, it says that it's a revolutionary idea that will enable cities to feed themselves. And then, as I told you, it consists of, you can grow the plant anywhere, in building, rooftop, skyscrapers, in your classroom, everywhere. And it can use also some lots of solar energy and wind energy. That's why it's called very energy efficient. Next. What is the status of urban farming in our country at present? Try to understand. This is very important. In our country, mostly now, India, most of the growers, they are using greenhouse-based urban farming in the either it is in soilless or hydroponics area. Total area coverage approximately is now 5,000 hectares. What are they growing there? Mostly they are growing vegetables, flowers, and nursery. The new things that is they are growing, that is called microgreen, herbs. These are the new crops that are. And there are two types of system here. That is very important. Technically, it is called open loop type system and closed loop type system. What is this open loop and closed loop? Open loop and closed loop, it depends that the water and nutrient you are using, plants will be used and then again it will be recycled. It will not go in the outside. So you have, the plant will utilize the water and nutrient, then extra will again go back to the main reservoir and then again it is used. So there will be there is no loss, and that's why it is called closed loop. But mostly in our country the farmers are using open loop. So open loop type, it has some wastage. But if it is closed loop, it is but closed loop requires very good management. And then, as I told you, in our country now, the systems are there, but they require technological trust. And what is required? Required is automation with sensors, controller, and aggregate. These are the things that is required for the future. Next, please. Now, future prospect of smart urban farming. See now, it has a very good future prospect in the sense that you can grow the crop round the year. You can grow the crop. There is no lots of healthy greens you can grow. You can use the artificial light and enhance CO2 levels. And important technology for doubling the farming income. So, if you want to have the increased income of the farmers, to have more entrepreneurship value, this type of technology is very important. Next. Okay. Now coming to the one particular technology that is helping these things, that is the what we call IoT. IoT is Internet of Things. Now IoT is a technology and it is now applied everywhere. See, the best example of IoT is what, let me tell you, that when you use the Ola and Uber for calling the for booking the taxi. So you have the app, you will book, the taxi will come to Squash campus here and can pick you anywhere. So this is the example of IoT. Now, any doctor in the world can see you by sitting in your home. This is the example of IoT. So now, in agriculture also now IoT is applied. Now IoT is applied mostly in precision farming. In dairy, it is very, very popular. In dairy, in veterinary area, it is also IoT is very popular. So nowadays everywhere IoT is used. Okay. Our car is now IoT. Like suppose the new car is coming. That okay, you will program your car that okay, after 10 minutes I will be in my car. So after 10 minutes, car will automatically start, and then you want to fix certain temperature in your car, you can fix it at here. So after 10 minutes, that temperature will be maintained in that car. So this is an example of IoT. Now how you will do, so you can understand that IoT it will simply, with the help of Internet of Things, it helps you in management of anything. Whether it is your transportation, your medicine, your car, your house, everything you can manage. So this is IoT. Next, so what is the, as I told you, IoT application in agriculture in the area of precision farming, greenhouse, livestock monitoring, drones. In these areas now, this technology is now very important. Next.
this is how normally the IoT system works for a small, say there are two cases, you are growing vegetable and then you have the orchard, okay? So then there will be lots of sensors you are using, soil moisture sensor. This is just an example of how IoT based irrigation works. So if you have the vegetable field and then you have the, there are two cases, this is vegetable field and this is orchard. So you have the field based, some sensors are there. So the soil moisture sensor will learn that, okay, now the moisture is at a certain level, now the plant required irrigation. So this sensor will give command to the pump, then pump will operate, okay? And then you have the app in your mobile or your laptop. So you will give the command and then pump will operate. Now, how much to give water, how much water to give, okay? When to close the pump, this is all the management work, okay? This your app will take, okay, now you know that, okay, my orchard is say 5-year-old orchard, so they require say 100 liter water per tree. So after 100 liter water, automatically the pump will close. So this is how the IoT based irrigation works. So if you have the orchard, you are traveling everywhere, you are in the shop, but you can manage your irrigation. This is the how the IoT based system works. Okay. Next. Now, for IoT based any farming, the first thing that is required are sensors. Now see what are the sensors required for agriculture. Normally, as I told you, we do not do soil, we do soilless based agriculture. So we do not require soil based sensor, we require soilless sensors. Why it is very important, I do not know you have seen or not, the most common soil based sensor in India, it is called tensiometer. Farmers are using tensiometer. Tensiometer is a sensor that will install in the field, it will give you the time to irrigate. But that tensiometer is not suitable for soilless because the moment it will keep it, it will just fall down. Because soilless sensors are different. So soilless sensors you have used, then nutrient sensors, climate monitoring sensors, disease sensors, nutrition sensors. So many sensors are required, you can see. And being in the students of especially of horticulture, you can see that many things are there that, and some of these sensors are available, but some of the sensors are very costly. They are not available easily. They are very, very costly. So sensor development, how to use it, these are the few things that is, it is very challenging. So most of the sensors are available, but some sensors are very costly. It is not available that easily, especially the disease monitoring sensor. Okay. Let me give you one very simple example of, here you are seeing there is a grow bag. You are seeing there is a bag, it is filled with coconut husk, okay? And then we are taking the crop like brinjal, cucumber, okay? And then in the right side, what I have done that in that greenhouse, there is a solar based panel and all the its irrigation and then pan evaporation and all, everything is automated, okay? So that you can do the automation. So you have to build the greenhouse. Go for soilless grow bags. Grow bag you can use in any container, in pot, in the nowadays in the grow bag, and then you can use this type of system. As I told you, this is a soilless system. So you have to use lots of soilless materials are there. But remember, these soilless materials are inert in nature. They do not have anything inbuilt. So whatever the nutrient that is required by the plants, say suppose your plant is cucumber, you should know that my cucumber plant is required this much nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, micronutrient, everything we have to supply here. Because these inert materials, they do not have anything inbuilt. Like in soil, कुदरत ने क्या जो soil है हमारा, उसमें कुदरत ने already nutrient दिया हुआ है. कहीं पर जम्मू में अलग होगा, थोड़ा कश्मीर में अलग होगा, दिल्ली में सब जगह कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिलेगा. लेकिन आप जब सोइललेस मटेरियल में जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं होता है, देयर इनर्ट होता है. और इसमें हमें जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसको डालना होता है एट राइट मोमेंट एंड राइट टाइम. अगेन प्रिसीजन फार्मिंग कंसेप्ट. So that's why this is the challenge. So I will show you that what are the yes. ये this is typically 4.90. Typically अगर हम इसको
हाँ यस यस यू कैन ग्रो इट। बट इसको जब हम IoT की लगाएंगे इसकी कॉस्टिंग यस यस अभी तो हम कॉस्ट पर टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। हाँ कॉस्ट हम इसकी डिस्कस करेंगे आपको। यस कॉस्टिंग विल इंक्रीज एंड देन हाउ मच इट विल इंक्रीज दैट आई विल टेक योर क्वेश्चन कि IoT से कितना कॉस्ट पड़ता है और ग्रीन हाउस में दैट आई विल टेक योर। So you understand now the very first basic step of soilless urban farming. The next step, next please. Okay, now this is a very beautiful system. Say this system I have told you. This is a aeroponic system. Okay. Now ये 50 plants का मॉडल है और let me tell you that ये पूरा सिस्टम हमारे M.Tech के स्टूडेंट्स ने बनाया था. Okay, of course with the help of a team. लेकिन कंसेप्ट उन लोगों का ही था. See now how it looks like. आपको एक बॉक्स की तरह दिख रहा है ना? ये बॉक्स में स्टीरो फ्रेम होता है ऊपर में प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए। ये प्लांट आपको दिख रहा है दिस इज लेट्यूस। नो प्लांट्स जो स्टाइरोफोम है उसमें पॉकेट्स बने हुए हैं वहां पर प्लांट हैंग। प्लांट का रूट डेवलप नीचे में और इसके जो बॉक्स आपको दिख रहा है बॉक्स के नीचे में देयर आर नोजल्स आते हैं जो कि आपको नहीं दिख रहा है। उन नोजल्स से हम स्प्रे करते हैं। वो क्या स्प्रे करते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स। नाउ कैसे स्प्रे करते हैं उसकी क्या टेक्निक होती है? राइट साइड गो टू द राइट साइड पिक्चर। राइट साइड में आपको दो टैंक दिख रहा है ना, एक टैंक वाटर है एक टैंक न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर है टैंक। उसके बगल में टाइमर्स है। वो टाइमर्स में होता है कि कितने देर के बाद इसमें क्या साइंस है एरोपोनिक्स में कि जो आपको न्यूट्रिएंट आपको भेजना है प्लांट में उसकी ड्रॉपलेट साइज क्या होना चाहिए, व्हाट वी कॉल कितना माइक्रोन होना चाहिए, ये साइंस है। उसके अकॉर्डिंगली आपको नोजल्स मिलना आजकल बहुत अच्छे नोजल्स अवेलेबल होते हैं एंड देन वो नोजल्स उसको स्प्रे करते हैं। देन इसकी स्प्रेइंग टाइम होती है, कितना देर तक स्प्रे करना है फिर उसको क्लोज कर देना है। एंड दे रिक्वायर स्प्रेइंग ऑल्सो इन द नाइट। आपको नाइट में भी स्प्रे करना है। ऐसा जैसे होता है ना कि हमें रात में भी खाना खाना है ना, प्लांट को भी रात में उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। सो इस तरह के सिस्टम में जैसा आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर राउंड द ईयर। अगर एक रात अगर ये बंद हो गया तो नेक्स्ट डे आपको प्लांट ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको प्लांट का हेल्थ खत्म हो जाएगा। एक जस्ट आपको इंडिकेशन बताते हैं। नॉर्मली इस प्लांट में हम क्या करते हैं, हम 30 सेकंड के लिए स्प्रे करते हैं। एक अच्छा बॉल डेवलप हो जाता है। 30 सेकंड के लिए स्प्रे किए उसके बाद टाइमर से सिस्टम बंद हो जाता है। दिन में टाइमर जो साइकिल होती है आफ्टर एवरी 4 मिनट्स और रात में साइकिल होती है 8 to 10 मिनट्स। मतलब 30 सेकंड स्प्रे किया 8 to 10 मिनट्स बंद हो गया और फिर चला। ये साइकिल है रात का। एंड दिन में 20 सेकंड स्प्रे किए 4 मिनट्स के बाद स्प्रे। ये स्प्रे राउंड द ईयर होते रहना चाहिए। देन इसमें भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू द प्लांट स्टेज वो अवेलेबल होना चाहिए। नो यहाँ पर तो नेचुरल लाइट ये तो ग्रीन हाउस के अंदर में हम यहाँ पर भी लाइट वाला पोर्शन नहीं दिए हैं। ओके नाउ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आप देख रहे होंगे कि ये जो प्लांट के नीचे का सिस्टम है वो बिल्कुल ब्लैक किया हुआ है। दिख रहा है ना आपको ब्लैक शीट है। क्यों किया गया है? क्योंकि नीचे रूट्स है। रूट्स में जमीन के अंदर रूट होता है तो रूट में क्या होता है? रूट के डेवलपमेंट के लिए यू रिक्वायर कंप्लीटली डार्क कंडीशन। तो आपको नीचे पूरा डार्क रखना है, ऊपर में लाइट चाहिए। So these are the few things that is required for that, and this is called aeroponic system. So aeroponics ये just एक छोटा सा सिस्टम है। एरोपोनिक सिस्टम का बहुत डेवलपमेंट हो गया है and there are many organizations that are working. Aeroponics is very successful for जो पोटैटो के ट्यूब्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मिनी ट्यूबर्स मैम। उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, we have not gone for potato side because potato को बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। We have tested its potential in leafy greens और हम लोगों को इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। What we have found, ये टेक्नोलॉजी को लगाने में है ना, इसको बिल्ड करने में आपको बताएं जो 50 प्लांट का मॉडल था, 50 प्लांट को बनाने के लिए जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा आया था, कंप्लीट बॉक्स, पंप, टैंक्स, टाइमर एंड ऑल दिस थिंग्स का, इसका हमें खर्चा आया था अराउंड आज से 4 साल पहले अराउंड 60,000। ओके इससे अगर आप यहाँ करेंगे क्या नाम है श्रीनगर में आज के डेट में तो इट विल बी अराउंड 1 लाख। ठीक है ना, 1 लाख रुपीज आपको लग तो रहा है कि क्या नाम है एक टाइम 50 प्लांट्स के लिए इट इज कॉस्टली ऑफ कोर्स जैसी चीज।
बट इसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं व्हाई दिस टेक्नोलॉजी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर। दैट इज जो ये लीफी ग्रीन्स है, आपको लेट्यूस दिख रहा है, हम लोगों ने टेस्ट किया कि अगर ये लेट्यूस को अगर आप ओपन फील्ड में ग्रो करें ड्रिप इरिगेशन के साथ, और इसमें देयर इज ए सेविंग ऑफ 90% ऑफ ड्रिप इरिगेशन से इसमें 90% वाटर का सेविंग है। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है फ्यूचर में। दिस इज वेरी वाटर एफिशिएंट। तो आगे के वक्त जब वाटर नहीं रहेगा तब इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, किसी भी टेक्नोलॉजी को मैंने बताया आपको कि पहले हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं एंड देन वी गो इट्स आईओटी। इसका आईओटी कैसे किया आपको देखो, इसमें क्या क्या चीज चाहिए। देखो हमने इसमें तरह तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेंसर, पीएच सेंसर, टेम्परेचर, डेप्थ के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर, सब देखो सारे सेंसर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। ये सब सारे सेंसर्स हमने लगाया, फिर ऐप डेवलप किया और वो ऐप डेवलप कर करके आप इसका क्लाइमेटिक एंड फर्टिगेशन मैनेजमेंट अपने ऐप से कर सकते हैं। तो ये उसका क्या हो गया आईओटी। तो किसी भी चीज का आईओटी करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू गो इट इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन से सेंसर्स लगेंगे, सेंसर्स के लिए फिर उसके बाद एक प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं हम उसके बाद एंड देन वी डेवलप इट्स आईओटी। तो पहले आप ये करके देन वी हैव डेवलप इट्स आईओटी बेस्ड मॉडल। दिस इज द एग्जांपल फॉर हाउ यू गो फॉर आईओटी बेस्ड ऑटोमेशन फॉर एरोपोनिक एंड दिस थिंग्स ऑल नॉर्मल स्टूडेंट्स कैन डू। इसमें कोई of course science is there but it is not that you require some very great expertise. Normal students, normal staff look. Next, this is the example of pure hydroponics. So जो आपका pipe based system आपको दिख रहा है, this is called hydroponics. So you have the channels are there in which water flows. This is called in pure water. This is called hydroponics. Next, okay. Now ये जो आपको system दिख रहा है अभी, this is called vertical farming. Now ये 1000 स्क्वायर मीटर का वर्टिकल फार्मिंग कंप्लीट सिस्टम हम लोगों ने IRI में डेवलप करके बना लिया है लास्ट 2 इयर्स में। हमारे पास एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था, उसके फंडिंग से ये बना है। नाउ आप लोग सब जानते भी होंगे, वी आर इन टच विद योर ऑनरेबल VC एंड देन जो आपका शोमा कैंपस है वहाँ पर 1500 स्क्वायर मीटर का ये ग्रीन हाउस बन रहा है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 1 महीना पहले हमने विजिट किया था, ऑलमोस्ट इट इज रेडी एंड आई होप दैट इन 2 or 3 months इट विल बी रेडी। ओके, एंड देन दैट विल बी वेरी गुड थिंग। सो उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा सिस्टम है, उसमें भी एरोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है, सोइललेस है, वर्टिकल है, लाइट का एक्सपेरिमेंट्स है एंड देन नेक्स्ट इज दैट इज द आईओटी। सो ऑल दिस थिंग्स जो कि अभी है तो हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, ऑलरेडी कर दिया है, हमने भाषा में शेयर किया था उनसे और अब वो आपके शोमा कैंपस में हो रहा है, वो रिव्यू होता है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। देखो ये उसके कंपोनेंट्स हैं। तो यू हैव द ग्रीन हाउस एंड देन यू हैव द मल्टीपल लेयर, आपको दिख रहा है ना अलग अलग लेयर्स, ये सब लेयर्स है हाइड्रोपोनिक बेस्ड। एंड देन यहाँ पर एक कंपोनेंट है, क्या हो रहा है कि जब आप वर्टिकल क्रॉप ग्रो करते हैं तो क्या होगा, अगर सनलाइट है तो ऊपर के वाले को लाइट मिल जाएगा, नीचे को लाइट नहीं मिलेगा। देन यू हैव टू यूज आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट कितने स्पेक्ट्रम का होगा, कौन कौन सी स्पेक्ट्रम चाहिए, ओके, और कितनी उसकी इंटेंसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं हर जगह। तो यहाँ पर पहले अल्टीमेटली यू रिक्वायर फर्स्ट द क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस, देन इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपको कितने लेयर की फार्मिंग करनी है। ये जो आपको फार्मिंग दिख रही है ये 6 to 7 लेयर से मैक्सिमम। अगर आपका बड़ा ग्रीन हाउस यू गो फॉर मल्टीपल लेयर्स तो कितना बड़ा ग्रीन हाउस कितना तक जा सकते हैं आप। तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। उसी हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एंड देन सारा ऑटोमेशन रहता है, तो आपका नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऑफ कोर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन वर्टिकल फार्मिंग का इस तरह के मॉडल्स का बहुत यूज है। और आजकल देयर आर मेनी, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देयर आर मेनी गुड वर्टिकल फार्मिंग के हमारे कंट्री में जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो आपको हेल्प करते हैं DPR बनाने में, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन टच विद, वो लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी आदमी एनीवन इफ यू लाइक
क्योंकि यहाँ पर हम आज बहुत ज़्यादा DPR की बात नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. बट इफ एनीवन वांट्स टू हैव द develop the DPR and so this sort of things, then you are most welcome. We will help you. Okay. Next. Okay. इस तरह का देखो आप ये सब चैनल्स होते हैं कि मैंने कुछ डिटेल्स दिया है, फ्रेम्स का क्या क्या ड्रॉप ले सकते हैं, ये सब है. Next. Okay. These are the small models of soilless, aeroponic, hydroponic, vertical. ये सब small मॉडल किस लिए हैं? एक आम आदमी के लिए, अगर कोई आदमी अपने घर में ग्रो करना चाह रहा है, बालकोनी में, रूफ टॉप पर, किचन गार्डन में, these are the small models हैं. It is not for green house के लिए बड़ा मॉडल होता है. These are the small models for the common people in and around the big city. Next. I have talked already about the advantage. क्या क्या advantage? There are so many advantages from crop production area. You can grow the crop around the year. Weather से कोई मतलब नहीं, आप grow कर सकते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छी क्वालिटी होता है. Anyone can ask that क्या एक लेट्यूस है वो खुले खेत में ले रहे हैं एंड द सेम लेट्यूस यू आर ग्रोइंग इन एरोपोनिक्स, क्या क्वालिटी में डिफरेंस है? यस, क्वालिटी में डिफरेंस है, बिकॉज हियर ऑल द न्यूट्रिएंट एंड ऑल दिस थिंग्स यू आर मैनेजिंग इट योरसेल्फ. वहां तो आप लगा देते हैं ना, तो क्वालिटी में क्लियर कट डिफरेंस है. और हमारे मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स नॉट ओनली द नॉर्मल क्वालिटी, जो स्पेशल क्वालिटी है प्लांट्स के, लाइक से विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब सभी हम लोगों ने टेस्ट किया एंड डॉक्टर देयर इज अ वेरी क्लियर कट रिजल्ट कि इसमें एडवांटेज मिलता है. व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस इंडिया के कंटेक्स्ट में? क्या क्या चैलेंजेस है इसके? एज आई टोल्ड यू, वी रिक्वायर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स. हर आदमी चाहता है कि हमारा इस तरह का मॉडल मिले, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव हो. जैसे ये पूछ रहे थे ना, एक क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस 1000 स्क्वायर मीटर का क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस अच्छा बनाने का, उसका आज के डेट में मार्केट कॉस्ट है 15 लाख. कितना है? 1000 स्क्वायर मीटर क्लाइमेट कंट्रोल अच्छा ग्रीन हाउस बनाने का मार्केट कॉस्ट है 15 लाख. अभी हम सब्सिडी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मार्केटिंग कॉस्ट. ये कॉस्ट जब श्रीनगर में आएगा तो और बढ़ जाएगा, बिकॉज इट्स ए रिमोट एरिया, से अराउंड 20 लाख हो गया. 20 लाख सिर्फ आपका नॉर्मल ग्रीन हाउस का कॉस्ट है. देन यू गो फॉर वर्टिकल हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड आप मॉडलिंग किए, आपका कॉस्ट 20 से बढ़ करके अराउंड 50 हो गया. 20 to 50 लाख में क्या बना आपका? इंफ्रा. एंड देन अगेन 10 लाख मोर रिक्वायर्ड फॉर IoT सेंसर्स, ये सब. तो अराउंड 60 to 70 लाख रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1000 स्क्वायर मीटर मॉडल्स का. हम लोगों ने जो IRI में बनाया है 1000 स्क्वायर मीटर का क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस विद ऑल वर्टिकल फार्मिंग, उसमें हमारे पास एक क्लोज चैम्बर भी था जहाँ के हम डार्क रूम लाइट का कर रहे हैं और सारा एसेसरीज का. इसका हमें टोटल खर्चा है अराउंड 80 लाख. जो शोआमा में आपका ग्रीन हाउस बन रहा है 1500 स्क्वायर मीटर का और ये बन रहा है, इसका खर्चा आ रहा है लगभग अराउंड 150 lakhs. 150 lakhs, yes. तो इसका मतलब कि इससे कॉस्टली थिंग्स, बट आप फिर उसकी इकोनॉमिक्स भी उसी तरह से निकल. नेक्स्ट. ओके, दिस थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन. ये एक टेक्नोलॉजिकल बुलेटिन है, टेक्निकल बुलेटिन ऑन हाइड्रोपोनिक्स. ये गूगल में फ्री है. आप गूगल में आप टाइप करोगे हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एंड जितनी बात मैंने बताया सभी चीज, सभी का डिटेल्स, आपको प्लांट में कितना न्यूट्रिशन डालना है, क्या हो रहा है, सारा कुछ उसमें अवेलेबल है. ये टेक्निकल बुलेटिन आपको फ्री में मिल जाएगा. आप जस्ट टाइप करो टेक्निकल बुलेटिन ऑन हाइड्रोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. बट इट इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश. ये गूगल में फ्री है. नेक्स्ट. अगेन this bulletin on smart urban farming, it is available both in English and Hindi. It is also available free. ये भी गूगल में फ्री, आप जस्ट टाइप करोगे ये मेरे नाम से आ जाएगा. ये IRI के वेबसाइट पे भी है, जो हम लोगों ने डाला है, स्मार्ट अर्बन फार्मिंग. बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसकी पूरी डिटेल से स्मार्ट अर्बन फार्मिंग, बोथ इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी. नेक्स्ट. ओके, दिस इज माय फाइनल स्लाइड्स. सी नाउ, तो जो हम ये बात कर रहे हैं स्मार्ट अर्बन फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग की, इट रिक्वायर्स, इट्स ए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा राउंड द एयर चीज मिलता है. एंड एज आई टोल्ड यू, यील्ड्स हाई है. द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज वाटर कंजम्पशन इज वेरी लेस. ओके, इसको हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, हाई क्वालिटी क्रॉप ले सकते हैं, राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना. और
इस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप दिया जाए, ये अभी इसका एक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट elaborate session and he delivered a nice presentation about hydroponics and aeroponics. Sir, I have